Hi guys, welcome back to episode 2 of WTF is Bangalore. We're in a pristine location as you can see behind us. Looks like we're on an island almost. Yes. Welcome back. Hi, guys. Meghna and I are back today. WTF is Bangalore, episode number 2. As you guys have given us a really good response on the episode 1, we were like, we have to make this a thing and we have to Yeah. get more guests on. Now, Meghna is going to be telling you who our next guest is. We are See- really excited for him. Yeah, and he's like a guest you all are familiar with. He's been on episode 3 and he has this amazing laugh, okay? It's like ho 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 ho. It's very like, pristine and like loud. Yeah, and for a he's second hilarious. I thought he's here. You guys can do the maths when compare her laugh and his laugh now. Yeah. And yeah, so we're going to be doing the same thing. We're going to be going around Bangalore, seeing Bangalore through the lens of this really esteemed guest. He's actually from Bihar. He's a Bihari babua who's made it in this Bangalore circles. I love it. I love that about him. And he's so unapologetic and cool. He's also a crazy investor. He's built Flipkart. Now he's building Udaan. So we're going to get into all the intricacies of how that really happened. We're going to go to a bunch of spots, very exciting spots. But it's a completely different side of Bangalore this time. It's like East Bangalore. Last time we went to South. So, yeah. Yeah, let's go. Let's go find out what it's like to spend a day with Sujit Kumar. Hello, Bilal. Hello, Meghna. Hello. Boss, how are you? I'm good. Very beautiful car, sir. Very beautiful Yeah. car, I must say. Eh, How often do you drive? I don't drive. You don't drive. Yeah, your driver seemed very stressed. Yeah, It's like, sir ko. I drive, but I love driving. But in Bangalore, it has this much this traffic. this passion has गलती से gone. भी Bangalore traffic के बारे में कुछ This बोलना नहीं. passion has gone, huh? I mentioned the Bangalore traffic in the previous episode. Mm-hmm. I'm still getting trolled for that. Yeah. People said तुम लोग आ जाते हो महाराष्ट्र से दिल्ली Ah, से. yeah, I've seen that. तो बिहार से नहीं बोला उसने. नहीं अभी हम करेंगे ना वहाँ पे बहुत सारे बिहारियों ने भी लड़ाई की. So just to give you a brief Yeah. on what this show is about. This is called WTF is Bangalore. It's led by Meghna and me. So we are going to see Bangalore Yeah. through the lens of you, Yeah. through your lens, your journey, Yeah. and how you have made it in the city. What was it like? What was the transition like? Why does a boy from Bihar like to live in Bangalore now? You know, before coming here, I have taken a training in Delhi, so that Bangalore can adopt me. Exactly. Delhi se to anything will be better than Yeah. Delhi. Yeah. Yeah. So yeah, we're gonna have to get you to drive us around. Yeah. Okay. And you're very kind enough to do this on a Saturday afternoon, the most peak traffic time. Yeah. No, Saturday is not so Not bad. that Yeah. bad. Not that bad. Saturday evening after like 6 is Yeah, bad. that will be bad. Yeah. Are you like the most successful Babua person? I can't claim that. So I want to know who else made it from Babua? Ah, that's a good question. If you'll see, you know PK Prashant Kumar, Yeah. he is also from very like close to my place. But commercial, I don't know. But as a Babua के शाहरुख तो आप ही है ना. politically, he's a great guy. Shahrukh. uh, बबुआ के एसआर के तो सुजीत कुमार ही है ना. सारके का मालूम नहीं, लेकिन हाँ सारके का फैन जरूर हूँ मैं. नहीं तो बबुआ के एसआर के बन गए धीरे धीरे. We'll make it. But let me. You've been in Bangalore for so long. Yeah. Have you ever like tried learning Kannada? I'm very bad in language. So first, honestly, I haven't tried that much. हाँ. And most of the Kannada, whatever we know, like Ellen Nilse and all, because of the initial period we were using auto in the city. So that's why, and the helps, हाँ. and the domestic helps, Yes. because most of them are local, Yeah. Kannadiga. Yeah. So to communicate with them, you know some like But it's batta not bad, washing. your yeah. pronunciation. तो थोड़ा थोड़ा is बोलिए. not थोड़ा bad. थोड़ा कुछ तो बोलिए. How to call it, like Gottila, like Ille Nilsi, like you have to stop here. Yeah. Uh,
Suppose Like you have to tell. Batta washing. Patra. Yeah, that's very good all actually. ना बैंगलोर के हेल्प ने ये सब सिखा दिया पात्रा बट्टा. No, because anyone who comes to Bangalore from outside only knows two things: Kannada gottilla, swalpa swalpa. ಸ್ವಲ್ಪ That's it. ಸ್ವಲ್ಪ. Yeah, धीरे धीरे. So this is a lot more than that. Yeah. यहाँ one thing I've noticed in your society, Yeah. सब अंग्रेज ही है यहाँ तो. काफी अंग्रेज हैं ये. बस ये बोलते हैं ना कि दुनिया में बहुत सारी ऐसे जगह हैं जहाँ पे अंग्रेजों के आइलैंड है. ये भी एक आइलैंड है. यहाँ पे Our कोई boy from Bihar has made it. Okay, but Sujit ji, I want to know. What we've tried to do is we are going यार to जी go. वो बोलोगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा हाँ? मेरे को. G नहीं चाहिए. जी नहीं बोलेगा, ठीक है. Sujit. सुजीत है. ओ सुजीत. Do you have a pet name? हैं? Do you have a have a pet pet name? name? कोई प्यार से कुछ क्या बुला? नहीं घर सुजीत में? ही है. कोई प्यार से बुला रही नहीं है. मेरे ख्याल से शकल ही वैसी नहीं है जो प्यार से लोगों को ऑपरेशन चलाने. जब फ्लिपकार्ट का ऑपरेशन चलाता था और कोई बोलते क्यूट लगते हो तो ऐसा लगता था साला जॉब ठीक से हो नहीं रहा है. But I'm going to ask the editor to put your old pictures, which I saw in your house right now. Yeah. You've gone through a crazy transformation in terms of fitness. I was a chain smoker. Oh. I was like a 40-50 cigarette a day. And this For was 17 during years. Flipkart or this was? मैं कॉलेज में हमारा जब so I went to college. ऐसा था कि कॉलेज में घुसते ही पहला काम करना था सिगरेट पीना था. तो पहले से मिशन मोड में था मैं. एंड ऐसा नहीं कि एक से स्टार्ट किया. हमने स्टार्ट ही किया 5-6 से. और वो महीने में 20-25 पहुंच गए थे. Oh, And then स्केल से स्टार्ट किया. 50, 60, 2 or 3 packs a day. मैंने एक चीज नोटिस किया है कि आपके सारे इंटरव्यूज, the ones that I have seen on YouTube and everything, Yeah. you are very well in media trained in terms of your answers. yeah. I've realized कि हर वीडियो में you said the same thing. So before I let you say the same things to us, I will tell you everything that I've learned. Yeah, please. Okay, number 1, सुजीत कहाँ पैदा हुए? बिहार में. देखना कौन सा शहर? Babua. बबुआ में पैदा हुए. फादर लॉयर है बट एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड है उनका. Yes. फिर एग्रीकल्चर. मेरे ग्रैंडफादर भी लॉयर. अच्छा. एंड देन आपका एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड है. Yeah. We still have land. Just like any other Bihari, you wanted to be an UPSC officer. That was the aspirational IAS. officer. Yeah, administrative. And IAS, IPS कुछ you भी. wrote it twice or you wrote it once or? Once. एक ही अटेम्प्ट दिया. Yes. उसके बाद पता चला ये तो अपने बस की बात नहीं है और we are not meant for What it. हम was your IAS नहीं बन elective? सकते हैं, हम करोड़पति बन सकते हैं. I like it. और ऐसा लगा कि बहुत अच्छा हुआ. Blessing in disguise. Yeah, actually, यार मैंने देखा हमारे बैचमेट्स और ये सारे एडमिनिस्ट्रेशन में गए. लेकिन एक चीज हाइंडसाइट, उस समय तो हम लोग का पैशन था और इट वाज द बेस्ट थिंग वी वांटेड टू डू. आफ्टर सीइंग देम ऐसा लगा यार छोड़ो यार ठीक ही हुआ नहीं हुआ. I saw this movie last night, 12th Fail. Yeah, 12th Fail. I have Yeah. also seen that. It's very close to real. Close to reality. It was based on some Yeah, inspired by some some Yeah. true Madhya person, Pradesh guy. Yeah, Yeah. it's Manoj So Sharma. one thing I noticed in that was they asked him कि तुमने चीटिंग क्यों की? He's like, हमें कुछ पता ही नहीं था. यही चीटिंग ही सही था. सब लोग कर रहे थे तो हमने भी कर लिया. So I want to understand, like, to get into your mindset, कि भाई when you were growing up, Yeah. what was the urge and what was the need कि भाई I want to be a UPSC? Was it because your parents said कि भाई this is the most respectable job, job stability मिल जाएगी? Yeah, what was the urge to do that? I think I've analyzed that and I think where I reached the answer because आप जब छोटी जगह पे होते हो ना तो वहाँ का सबसे बड़ा आदमी वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन होता है. या तो कलेक्टर होता है जो वहाँ का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिसको डीएम बोलते हैं. Yeah. या तो वहाँ का पुलिस होती है, एसपी होता है जो कि आईपीएस बन के आता है. जी. या तो जज होता है, डिस्ट्रिक्ट जज. am I right? Yeah. तो आपको लगता है ये सबसे बड़े लोग हैं और बाकी लोग क्या है? या तो छोटा बिजनेस है या तो फिर फार्मर्स हैं या छोटे मोटे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, वो भी नहीं होती इनफैक्ट. तो आप लोग को लगता है ड्रीम क्या है जब आप स्पेशली दो साइड वेयर लाइक गुजरात में
आदमी बड़ा होता है इंडस्ट्री देखता है कि यहाँ फैक्ट्री लगी है, ये धंधा कर रहा है. Yeah. उसको घंटा नहीं लगता कि क्यों आईएएस बनना है, ये बड़ा रिस्पेक्टेड आदमी है. Yeah. सो हर सोसाइटी में आप देखोगे, हम लोग की सोसाइटी में जो सबसे इंस्पिरेशनल पोस्ट और जो लोगों को इंस्पिरेशन देता है, इज्जत जहाँ मिलती है, सबसे ज्यादा इज्जत मिलती है, वो होता है आईएएस. तो लोगों को लगता है बस ये इसी को करना है. फेयर. तो यू वर लाइक कि भाई क्योंकि यहाँ इज्जत है तो हम करेंगे. यस सर. वरना बाद मतलब में बिहार में जाओगे तो लोग बोलते हैं दहेज भी मिलता है उससे. तो फ्लिपकार्ट के बाद दहेज मिला कि नहीं? नहीं यार, लव मैरिज हो गया तो दहेज नहीं मिला. मेरे पिताजी को अभी भी लगता होगा, कभी बोले नहीं, लेकिन मेरे को लगता है कि उनको लगता होगा कि ये अच्छा काम नहीं किया इसने. But as a student, like, did you want to study? Did you want to like play? What was like your? So I was good. I was good in studies, like always good. But I was also good in sports also. But वही ना कि देखो sports में कोई facility तो होती नहीं है छोटी Yeah, जगहों में. Like yeah. when you grow up like tier 4, tier 5 city, there's no facility. Yeah. एक फील्ड सा होता है, या तो you can play football, some cricket पूरा हिंदुस्तान खेलता है, कहीं भी खेल लो. Yeah. Right. We had our own local sports where most of the people don't know. गिल्ली डंडा, गद्दिल, बहुत सारे चीजें होती हैं, कबड्डी, ये सब, like long jump. You don't need anything, any equipments or facilities. Yeah. So those things you play. Badminton, everybody plays. You play badminton also. ये आपके बिहार के डेज है? हाँ, मैं जब शुरू में बता रहा हूँ, जब आप स्पोर्ट्स का, like I was there till 12th, am I right? यस. Yeah. तो जब आप 12th तक जहाँ पे रहते हैं, आपके तो फाउंडेशन ईयर either sports or education, बाद में तो only you sharpen it or go up, train yourself, am I right? तो वहाँ पे ऐसा कुछ था नहीं. अभी भी मेरे ख्याल से tier 4 वगैरह में ऐसे, बट इंडिया काफी चेंज हुआ है, तो वो भी चेंज हुआ है, ऐसा नहीं है कि नहीं चेंज हुआ. How were exams in school? Like, would you cheat a lot with a bunch of friends and all of that I never stuff? cheated. Really? Yeah. I've cheated. No, I never cheated because I like I said, I was good in studies also. Nice. So And you like reading history? no, बाद में history has I went to, I think in my college IIT and all. So I don't know. I fall for history because I always believe history is a form of psychology, and to understand the people, Yeah. you have to study history, but from not one angle, because it's also biased. Yeah. People write it from their own specs Yeah. and पढ़ते an ही नहीं opinion. थे. आप तो मेरे को एनालाइज करते थे. हाँ, बेसिकली आप, मेरे को लगता है कि काफी ह्यूमन साइकोलॉजी, हिस्ट्री इज जस्ट अ रिफ्लेक्शन ऑफ साइकोलॉजी, हाउ द पीपल आर थिंकिंग एट दैट Yeah. टाइम. Yeah. सो Is उससे that मेरे why को काफी you अच्छा and लगता Nikhil था. get along so much? We discuss a lot on these people, why people think like that. But I must say that Nikhil, दो बोलता है ड्रॉप आउट, मेरे को लगता है वो सबसे ज्यादा पढ़ता है. उसने अपने आप को बैच ले रखा है कि पढ़ा नहीं है. वो बोलता है उसका इतना मलाल है उसको कि उसको, मेरे को लगता है पीएचडी, मेरे ख्याल से वो डॉक्टर की भी उससे कोई तो वो मिला था. Yeah, in Some university Delhi. has given him a doctorate. Yeah. जॉइन दो तीन यूनिवर्सिटी में हो गया. तो मेरे को लगता है कि वो 11th जो ड्रॉप आउट हुआ है, मेरे ख्याल से सारी डिग्री इकट्ठा कर लेगा वो. That's true. But he read a lot. He read a lot. He does. He does. नहीं And his तो books are अब very मैं वापस good. आपको यूपीएससी डेज पे लाना चाहूंगा. जी, बताइए. आई वांट टू अंडरस्टैंड, लाइक बिकॉज यूपीएससी सच अ हॉट टेक इन नॉर्थ इंडिया, कि वहां पे अगर आप यूपीएससी बन मेरा गए. ऐसा नहीं है नॉर्थ इंडिया, आप देखोगे जहां भी ये इंस्पिरेशन इज डिस्ट्रिक्ट एडमिशन, आप तमिलनाडु में चले जाइए. I'll tell you the history. सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन में या तो बंगाल होता था, या तो आप ये टैमब्रैम कम्युनिटी होती थी. यस. I'm right. If you'll see most of the initial good officers which were assisting our prime minister, all the former prime ministers were Yeah. from this region. पहले बंगाल, then फिर वो धीरे धीरे बिहार में आ गया. लेकिन ऐसा नहीं है, राजस्थान, आप आंध्रा, महाराष्ट्र, एवरीवेयर पीपल कम्स. लेकिन एक चीज कॉमन है, आपको होगा कि वो टियर 2, टियर 3 सिटी का होगा लड़का, ज्यादा से नंबर. माइट बी सक्सेस रेशियो बी डिफरेंट, Right. बट जो इंस्पिरेशन है ना वहाँ के लोगों को कि हमें ये बनना है, क्योंकि मेरे को लगता है, मेरा अपना हाइपोथेसिस है, बिकॉज दे सी दैट दैट्स द अल्टीमेट पावर और द इज्जत इन सोसाइटी, रिस्पेक्ट दे गेट इन सोसाइटी. अच्छा. I just wanted because I thought कि they will love it if I'll clear the UPSC.
यार हाँ इंजीनियरिंग तो हो गई लेकिन अगर यूपीएससी में तुम कर सकते हो टाइप। Yeah. तुम्हारे अंदर है पोटेंशियल। उनको Do लगता you था। have siblings? या You have a one young. brother and sister. And you're the elder one? No, I am the youngest one. Oh. Both of them are twins. Oh, so cute. आपने यूपीएससी पे ड्रॉप कर लिया, फिर उसके बाद अब आप जेई क्लियर कर लिया। नहीं जेई के बाद यूपीएससी होता है। अच्छा, जेई के बाद यूपीएससी। So yeah, JEE I have done and then आप क्योंकि you need graduation for UPSC. Correct. Am I right? So I was already cleared the engineering. Okay, how was IIT then? IIT was good. Even it is a funny story, but मुझे तो IIT के बारे में नहीं पता था। मुझे तो BHU जाना था। मुझे BHU जाना था। BHU घर के पास है। और वहाँ पे लोग भोजपुरी बोलते हैं। कोई लैंग्वेज का प्रेशर नहीं था तो मुझे तो वहाँ जाना था। एक्सीडेंटली मुझे IIT दिल्ली में पता नहीं कैसे आ गया। But do you आज think भी that वो was a mystery है। mistake or that was meant to be? I don't know. From my side, I never chosen to be in IIT Delhi. I don't know, somehow I landed there. Right. और फिर उसके बाद when you went to IIT, did you struggle with language? A lot. How long did it take Give me an example. Give me your first year you've gone in. Yeah. IIT So Delhi हमें में- हमेशा ऐसा लगता था कि यार बिना बोले इन्हें पता कैसे चल जाता कहाँ से आए। Of course. बिना बोले। ये तो क्वेश्चन भी नहीं पूछा कि where are you from? पहले से बोलता और बिहार में कहाँ से आए हो? What gave it away? Please जरा। फिर मुझे बाद में फिर एनालिसिस की कहा ओ तो मैंने किसी से अपने थोड़ा फ्रेंड से पूछा कि साले तुम लोग पूछते रहते हो, तुम लोग पहले से पता होता। But now you have a very good command on your English. आप UK में talks दे रहे हैं and all of that. So it was a conscious effort from your end कि हम धंधा तो बढ़ाएंगे but communication needs to be improved. मेरे को लगता है कि आई थिंक वेयर यू स्टे ना, आई थिंक एनवायरनमेंट का बहुत बड़ी देन है उसमें। That's आई true. थिंक द कंट्रीब्यूशन कि आप बैंगलोर में हो चाहे दिल्ली में हो, सो दैट्स मेक्स यू गिव यू द कंफर्ट एंड लाइक अपॉर्चुनिटी टू टॉक इन दैट। अब चले जाओ अब मेरे भभुआ में और बनारस में, Yeah. जितना भी वो अपना इंग्लिश भूल जाओगे वो आपको भोजपुरी सिखा देंगे। आप भोजपुरी बोल लेते हैं? बहुत अच्छे से। आज भी मैं ऑलमोस्ट एवरी ऑल्टरनेट और एवरी डे आई टॉक टू माय फादर इन भोजपुरी ओनली। Okay, जरा हमसे कुछ। Yeah, teach us something. यार हर लैंग्वेज लाइक यू सेड दैट ना तमिलियन टू स्पीक, मुझे सिर्फ एक ही चीज you only need interaction, am I right? Yeah. So like, what's your name? How do you say that in? मुझे भोजपुरी में एक ही चीज आती है। हिंदी की जैसा ही होता है लाइक का नाम बा तोहार, का नाम बात बात तुहार। ए भैया, ए भैया का नाम, का नाम लाइक है। दैट्स ए UP prefix, but it's very close to UP Bihar and the language is same. I only know लगावे तू जब लिपस्टिक, हिले वे आधा डिस्ट्रिक्ट, Famous जिला song, टॉप famous लागे song. तू। अभी एक अलग आया है, नया गाना आया भोजपुरी का। कौन सा बताइए? पता नहीं कौन सा है, हमें कमरिया कमरिया टोले लागा। एक कौन सा है, केकर मेहनत के फल बाड़ू। नहीं, it needs to be like catchy and all. Hey, it's very catchy. हाँ, फिर मैं नहीं समथिंग गुलाब जैसन खिलल बाड़ू तू केकर मेहनत के फल बाड़ू। ये नया ट्रेंड है, इट्स नॉट लिपस्टिक से आगे निकल गया है। लिपस्टिक से आगे निकल गया। क्या बात है। Was एक your- हमारे जमाने में ना रेन मार्टिन का एक रेड Renan सा Martin, हाँ, Renan correct. Martin। Renan तो Martin। उसका पब्लिशर मिला मेरे को जब हम लोग आए थे फ्लिपकार्ट में, तो मैं कहा यार तूने बहुत बुक्स बेचे हैं लोगों को, तू इधर आ, तू ये बता कि इससे लोगों को फायदा हुआ भी है क्या? खरीदा तो बहुत लोगों ने। नहीं, बट रेनर मार्टिन वाज लाइक The OG. कोविड निकालने वाली डोलो थी ना, जैसे कोविड को डोलो सॉल्व कर देगा, वैसे ही रेनर मार्टिन अगर आपने पढ़ ली, लाल रंग का कवर था ओ उसका। बाबा रे Yeah. बाबा। हाँ। मैं उस पब्लिशर को बोला जितना तूने किताब बेचा ना लोगों के इंग्लिश के नाम पे, सीरियसली पीपल फर्स्ट थिंग दे बाय दैट बुक। Yeah, because even I used to sit and do every day Renan Martin, half an hour. My mother would make me do it. नहीं, बट यू मस्ट बी ब्रशिंग योर इंग्लिश। No. मैं तो बेसिक सीख रहा था रेनर मार्टिन से, क्योंकि आई फेस द सेम प्रॉब्लम। आई मूव फ्रॉम औरंगाबाद टू पुणे। Oh. या तो व्हेन आई मूव फ्रॉम औरंगाबाद टू पुणे, हमको तो लगता था औरंगाबाद ही इंडिया है। सेम हमें लगा औरंगाबाद से निकल गए, अब देश से बाहर आ गए। तो वीजा लगा है। सर मैं कितने दिन खेलने नहीं गया शाम में, क्योंकि बच्चे इंग्लिश में बात करते थे वहाँ।
सिर्फ हाइड एंड सीक खेलता था. लेकिन मेरा मानना है लैंग्वेज तो होता है, लेकिन इफ यू आर कॉन्फिडेंट ना, हाँ. कोई फर्क नहीं पड़ता है. हमारे यहाँ तो डीपीएस आर के पुरम के डीपीएस में कौन डीपीएस से पढ़ा है? DPS में डीपीएस आर के पुरम एक वहाँ पे कूल लोगों का जमात आती थी वहाँ से आईआईटी फिर में. वहां से कोई पढ़ लिया. है एस्टैब्लिश्ड. मेरी माँ का सपना था अगर कोई डीपीएस आर के पुरम से आया तो स्मार्ट ही होगा. स्मार्ट नहीं, मैं बता रहा हूँ सबसे ज्यादा जो लोगों को कॉम्प्लेक्सिटी देते थे कैंपस में वो होते थे Superiority डीपीएस आर के पुरम. नो बहुत सारे डीपीएस होते थे. मथुरा रोड हुआ, ये हुआ हमारे जमाने में. पर आर के पुरम वाज आर के पुरम वाले लोग तो एकदम ऐसे बैज लगा के घूमते थे. तो उनसे बात करने में मजा आ जाता था. दुनिया सिर्फ हमने देखी है. और उसको पता चल जाए तुम्हें इंग्लिश नहीं आता तो ऐसे लगता था जैसे नहीं होता था कि पुराने जमाने में हिंदुस्तान में एक सोशल प्रॉब्लम होती थी छुआछूत की. वो वाली बीमारी थी. उनको लगता था कि व्हाट आई एम क्लास इज सो मास हु टू टॉक. ऐसे बिहेव करते थे. ऐसा लगता था आज ही रिजाइन करके घर वापस लौट जाओ. आर के पुरम वाले मिल गए आज. और सारे एक जैसे होते थे. सो आई पिक्ड अप द स्पोर्ट स्क्वॉश देयर. Nice. पैडल खेला है आपने? पैडल टेनिस. हाँ, पैडल खेला, 1-2 बार खेला है. दुबई में खेला मैंने. बट या वंस यू अंडरस्टैंड दिस स्पोर्ट्स, पहली बार जब मैंने देखा आईआईटी में कि ये यार एक दीवार पे बंद कमरे में एक बंदा बॉल को मारे जा रहा है, कौन सा स्पोर्ट्स है? आज तक तो मैंने देखा नहीं. You're such a true example. This is a great definition of squash. दीवार काहे मारे जा रहा है भाई? क्या नाराजगी है इसकी? हाँ, और तेज गुस्से में होता ना कि फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा हूँ. हाँ. मैंने कहा क्या करेगा, मतलब व्हाट इज दिस स्पोर्ट. सो आई स्टार्टेड फ्रॉम वेरी स्मॉल फॉर्म. ऑलवेज आई वाज फाउंडर काइंड ऑफ. Okay. Yeah, you did the KPO thing. No? KPO in 2005, 4-5. And then you closed that in 2008, right? 2008 because ये recession time में उसके बाद सारे 2000 great recession has Yeah, happened, yeah. right? जिसमें ये Lehman Brothers and all those banks has been finished. So How did the recession? I mean, like I never lived through it. So how did the recession affect India? Do you think? Like what all did you see on ground? oh my God, I can tell you one example. So I have earned some money through delivering the projects and all. Yeah. I'll not quote how much, but it was significant money. In 1 month, it has become zero. It was double-digit few lakhs. At that Right. time, it was very big money. Right. It has become zero. Since then, I never gone to market. So you had to Satya. start This all is over Satya again. Bar. Oh yeah, this is Satya. This is the new one. This is the new Satyaba. Yeah. The same one they have shifted. So in the Flipkart days, we have like all the after evening beer pina, Sara discussion, strategy and all. We always hang to this place. Yeah. But this was not the location. I Correct. will It show you was the location. ahead on the right. I'll show you the location. But यहाँ पे Flipkart की सारी strategy management यहीं पे होता था. अच्छा देख लो But फ्लिपकार्ट it's बना the- था सत्याबार में. You know, but it was a thing. Like even when I used to work in a startup like 10 years ago, it was in Koramangala, and we used to go to Satya's every day after 5:30, yeah. and we used to talk about our issues. We used to talk about all of this, drink. और a हमारा little एक bit. दोस्त हुआ करता था तपस रुद्रपतना, उसका तो सेकंड होम था. मैं और वो काफी जाते थे, दोनों साथ में रहते भी थे एक फ्लैट में. Early days. Where did you stay in Bangalore? I'll tell you. Before marriage, after marriage. Before marriage. Before marriage, Tapas Rudrapatna was my flatmate, and he was one of the initial guy. Few of us who was like in the journey of Flipkart from day zero. We have seen the journey. And you were staying in Koramangala. Yes. So Nice. पहले तो मैं ऑफिस में भी रहता था. अच्छा. First 3-4 months I was in office only. सारे trend, ये हमारे सारे गेस्ट ऑफिस में क्यों Office रहते थे? What area is this? This is Koramangala. 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 Yeah. So I'll tell you, the 2008 recession time, the first startup, with no revenue because it was not, यार उस समय कोई funding तो होती नहीं, revenue based, all boutique firms होती थी. हाँ. So no revenue and we were like 25 people. हाँ. So we are not able to pay their salaries and all. हाँ. So we moved on. In the meantime, the Sachin and Binny has started Flipkart in 2007 October.
हाँ. and I think October. And then because I know them, they are in Bangalore. Started. I never wanted to leave Delhi. हाँ फिर? फिर आया 2000 I came in. So you against your will you were like चलो चलते हैं बैंगलोर. Actually हाँ मुझे अच्छा लगा कि एक बार देख के आते हैं. And somehow if I don't remember exactly, but ऐसा था कि दिल्ली में भी हमें one thing कि दिल्ली में तो जाना पड़ेगा बुक्स वगैरह की वजह से. तो मुझे लगा कि चलो दिल्ली में भी तो आ ही जाएंगे टाइप से समथिंग लाइक दैट. और हुआ भी ऐसे. लाइक आई हैव एस्टैब्लिश्ड बिग ऑपरेशन इन. यहाँ पे आया, फिर कुछ महीने रहा, फिर दिल्ली चला गया बिकॉज बुक्स वगैरह सप्लाई वगैरह को इम्प्रूव करना था. दैट्स व्हाई आई लेफ्ट फॉर दिल्ली. दिल्ली में जाके वहाँ पे फिर सारे पब्लिशर से मिलना, ऑन बोर्ड करना. I'll show you the office. 2008 में when Sujit came to Bangalore, Yeah. what was Sujit's first thoughts when he saw Bangalore? Back then it was very different. It was very different. But thought was कि हाँ like it's very different than Delhi. Yeah. Very different. वहाँ पे जैसे लोग बोलते हैं ना ट्रैफिक तो बात नहीं करते हैं, लेकिन वहाँ का सेटअप होता था कि अरे यार रोड बड़ी चौड़ी. वहाँ ऐसा नहीं था कि ट्रैफिक का प्रॉब्लम नहीं है. दिल्ली में भी ट्रैफिक का प्रॉब्लम है, लेकिन होल ओरिएंटेशन इज वेरी डिफरेंट. Yeah. You're mentally prepared कि यार कैपिटल है ट्रैफिक हो गई. पर बैंगलोर No, but Bangalore in 2008 was very calm, peaceful. There was a lot of like greenery. ये BSNL का ऑफिस होता है. Yeah. And this was our address, the opposite BSNL. And 147 bar C was the building number. Still, I think I remember. That's a ABC. This was the first building. That's a C. Oh. This one. The guy who just came out. Flipkart Nice. Finance Private Limited. अभी भी हम लोग क्योंकि we have bought it. So it just maintained now. Yeah, I was living on the first floor. The same same building. This is and you're single at this point. Yes. You haven't met the love of your life. No, I know. Actually, I know her. That's why one of the reason कि दिल्ली से बाहर नहीं जाना. No, wait. Don't take credit for this question. This So is let me first tell you one thing. What's your son's name? Swastik. So Swastik, you're a very nice and kind son. I met him outside your house. And I was very surprised. पहले दोस्त ने मेरे से ब्रिटिश एक्सेंट में बात की. मैंने बोला ये ब्रिटिश एक्सेंट कहाँ से आ गया? आजकल इंटरनेशनल कॉलेज स्कूल में जाते हैं ना बच्चे. अच्छा. वहाँ पे आप तो फिर भी ब्रिटिश में बात किया. हमारे सोसाइटी में तो इंग्लिश अमेरिकन एक्सेंट में बात करते हैं बच्चे. आप पूछने पर कभी यूएस गए हो? नो. लक्षण पूरे हैं पर. हाँ. So I met him. And I was like, Swastik, zara tell me, I'm meeting your father. What all should we ask him? He's like, give me 5 minutes. And then he went inside and he quickly wrote on a piece of paper. Yeah. So his first question was, how did you and your wife meet? आप लोगों ने कोई बताया नहीं उसको? भाई उसको मालूम है, but might be he wants the world to know. yeah. I'm sure there's a story here. I think during our UPSC preparation day only we met. Oh, she was also UPSC candidate. Yeah, so she was in Delhi University. I passed out from IIT Delhi, but yeah, after college I met her. We are believers of detail. Yeah. Yeah, ऐसे I So met her. coaching करता था UPSC की, and she was also in the same class, and that's where I met her. And the rest of the things are history. And when you start meeting. So what was इसीलिए your clear first? नहीं हुआ पहले तो. नहीं उससे पहले इंटरेस्ट था कि अब नहीं करना. When I analyzed that कि नहीं, something I don't want to do it. So what was your first like date or first time that you spent ऐसा लगता था together? UPSC का ही बात करनी है. See, also from like tier 2, tier 3 city. Right. तो हर What did you आदमी like about her? almost everything. What you can say that? You want me to say something? Trouble. Now that you have answered your son's question, Yeah. now we have another question. Please. That your friend asked us. Yeah. So we asked Nikhil. हाँ. We're like, यार सुजीत से क्या-क्या पूछे हम? So Nikhil was like, he's very famous amongst women. Yeah. बेटा पूछ रहा है कि मम्मी से कैसे मिले? He's talking about himself. ये बहुत पिंग पोंग हो रहा है. निखिल मेरे को लगता है camera निखिल ने फंसा हम दिया. सबको ट्रेनिंग दिया है. निखिल की Whoever वजह needs to watch this, I hope you are watching. निखिल की एक्सपर्टीज है सारी.
So what is the story behind you being popular about with women? हैं? Is it just a joke? ऐसे जोक है वो टांग खींचते रहता है लोगों की That he does. That he does. और ऐसे क्वेश्चन पूछेगा जिससे कि तुम ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाओ क्वेश्चन की उसकी एक्सपर्टीज है वैसे निकल फ्लिपकार्ट वाला टेंशन में फोन कर रहा है कि कोई आगे शूट वूट करने उसको जरा बोलो कौन है यू वर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑपरेशंस एंड स्केलिंग ऑफ फ्लिपकार्ट नो या सप्लाई चेन Didn't you ऑपरेशन do civil engineering? या आई हैव डन सिविल And how did you decide that ये करना है अब? डिसाइड थोड़ा होता है मेघना अब कोई बोले सिविल इंजीनियरिंग से यूपीएससी का क्या लेना देना है So you just did it. यस एंड Basically. आप देखोगे आज के डेट में कोई अपना ग्रेजुएशन और आईआईटी किसी और से किया है कुछ कर करता लाइक कुछ नहीं है। मोस्ट ऑफ द लेट्स से इन्वेस्टमेंट बैंकिंग आप देखोगे सारे इंजीनियर्स मिलेंगे Yeah. उसका इन्वेस्टमेंट बैंकिंग से और इंजीनियरिंग से क्या लेना देना सही बात कंसल्टेंसी से क्या लेना देना वहाँ आईटी वाला क्या कर रहा है लेकिन ऊपर तक सीईओ भी वही है नहीं तो आप अब ऑपरेशंस एंड यू वर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्केलिंग फ्लिपकार्ट या व्हाट वाज दैट लाइक व्हाट वाज द जर्नी लाइक It was like one of the, not one of that was the best journey. I've learned almost everything in that journey. So working, scaling, how to solve problem, supply chain, hiring people, firing people. Hiring is easier, firing is हायरिंग tough. एंड फायरिंग कैसे करते हैं Yeah. Hiring is easier, firing is very tough. मुझे बताइए what नहीं हायरिंग तो ठीक है मैं समझ सकता हूँ you must be having some framework of sorts what is the most ethical way of firing people यार उनको अगर अच्छे से बात करो और उनको फीडबैक दो ना आप बट ऐसा नहीं कि आज से काम नहीं करोगे आई डोंट बिलीव इन दैट उस समय थोड़ा बुरा लगता है लेकिन दे अंडरस्टैंड योर पॉइंट ऑफ व्यू बट यू हैव टू बी लाइक रियली ऑनेस्ट व्हाट यू वांट And what kind of, like, I know this is a tough question to answer, but what kind of employee did you really like? Like, do you like problem solvers? Do you like people who just follow rules? Do you know? जैसे एग्जाम्पल तो निखिल को पता है कैसे एम्प्लॉय पसंद है किस तरह के? मुझसे जो बात ना करे अपना काम करे घर चले जाए वो तो राम राज्य हो गया जिसमें किसी को किसी से पूछने की कोई जरूरत नहीं हाँ ही इज लाइक हर इंसान अपना मैनेजर है Yeah. तुम जिस काम के लिए आए थे वो करते मेरा रहो मानना है कि राम राज्य तो है नहीं लेकिन आपका क्वेश्चन है कि जो द पर्सन हु इज नॉट अबाउट देखो क्या होता है ना आइडियली एक बंदा जब पैशनेट होता है ना तो वो ऑनेस्ट भी होता है हाँ क्योंकि वो फोकस्ड होता है उसे करना क्या है फिर वो ऑर्गेनाइज्ड भी होता है उसके सारी चीजें दिख रही होती है और सब पैरामीटर ठीक दिख रहता है अब आप उसको बोलते हो कि यार इसने इस पे फोड़ दिया ऐसा नहीं है वो सब कुछ है उसके अंदर जो आदमी काम नहीं कर रहा होता ना उसको आपको ऑनेस्टी में उसके परफॉर्मेंस में उसके डे टू डे ऑफिस Yeah. कमिंग गोइंग उसका एनर्जी लेवल और हर जगह प्रॉब्लम दिखेगा वो सिम्टम एक ही है सो आई थिंक दैट्स पर्सन हु आर पैशनेट आई लाइक देम कि यार कुछ करना है Do you बट still वो have हर आदमी बोलता है मुझे कुछ करना है लेकिन वो पता तब चलता है जब उसको काम दे दो Yeah. मैंने- And you said you're a very execution person, right? नहीं execution नहीं I in fact saw his video yesterday he's like I am very smart with getting a team on board और उनको काम कैसे काम करवाना है उस हिसाब से मैं नहीं hiring पहले करता काम हूँ तो सीखोगे ना हाँ नहीं और फिर उसके बाद मैं I take the back seat and I watch that's perfect execution in my head no so I think when you understand कि अच्छा क्या when you are काम in है? control when Yeah. you go back you should also understand कि मुझे आता है Yeah. हाँ ये अचानक नहीं कि एक दिन लाला की तरह निकले और बोले कि ये तुमसे अच्छे से हो नहीं रहा वो मुड़ के पूछेगा सर करना कैसे है और उस समय नहीं मुझे क्या मालूम कौन इज्जत करेगा आपकी ये बात तो सही when you give a feedback then you should also be कि like you should be able to execute that person's job Yeah. that's true अब आप पोस्ट रिसेशन फ्लिपकार्ट पे हम आ गए yeah अब आप स्केलिंग कर रहे हैं आप फिगर आउट कर रहे हैं बैंगलोर में आ गए सत्याबाद में बैठे हैं बैंगलोर से फिर दिल्ली चला गया मैं अच्छा 2000 I think in initial days only I gone to Delhi it's 2009 itself and then what was 2009 10 11 like I was in Delhi or scaling so operation first in Delhi then Mumbai then Calcutta all this city I was opening operation one after one. one personal question like did you taste money by this time like good money When? like at 2009 At 10 this 11 time. Not really, but we got exit in 2012. Some bit of buyback in eShop.
we got money. And when you started, was the aim to become rich or कि भाई कुछ value का बनाना है या क्या करना है? ये बड़ा मुश्किल है कि आज मैं उसको डिफाइन करूं, बट आई कैन revisit my what I was thinking. I think the hunger was I wanted to learn. हाँ. एंड ऐसा नहीं था, क्लैरिटी थी फिलोसफिकली कि लर्निंग होगी फिर पैसा बनेगा. एवरीबडी वांटेड टू मेक मनी, दैट्स कॉमन. एक बच्चे से भी पूछोगे तो जाके बोलेगा करना क्या है, तो बोलता पैसा बनाना है. तो वो तो बड़ा स्टूपिड सा क्वेश्चन है. मेरे आई थिंक आई वाज समवेयर ऑप्टिमाइजिंग फॉर लर्निंग अ लॉट इन इनिशियल डेज. So do you get like bored after, like suppose you do something and like 1 year down the line you stop learning. Do you get bored then and do you want to learn more that was again? the beauty, no? In when your things are building up, you're learning like one version, other version, version 1, And there's version 2, always version some 3, problem or the some other. problem. Yeah. वो बड़े कंपनी में होता है कि यार जहाँ पे हम like Flipkart was growing 100, 200, 300, Yeah. 400% year on year. Yeah. So you are learning a lot, am I right? New market. आप अगर मान लीजिए बड़े किसी MNC so called उस समय बोलते थे MNC big corporation, तो उस समय क्या होता है कि वो ग्रो करते हैं 10%, 15%, 20%, बेस्ट कंपनी 25%. Yeah. And that I'm not saying that there's no learning. Of course, you are learning from Just different a function slower, and all. more But हाँ, progressive. slower. और हम आपसे We have compressed that learning in, मेरे को लगता है 10-15 साल का in those 4-5 years. Correct. और हम आपसे फिलोसफी इसलिए करा रहे हैं क्योंकि आपके ही फैन, जिसके आप फैन है, SR के बोलता है कि तो एक बार सक्सेसफुल बन जाओ, फिर उसके बाद जितनी फिलोसफी करना है करो. नहीं, इसीलिए वो क्वेश्चन है ना कि आपको पैसे के लिए. मैं कहा क्वेश्चन आप जैसे मैं कि कोई एक दिन क्वेश्चन कोई जर्नलिस्ट पूछा था, आई स्टिल आई रिमेम्बर, कि कितना स्ट्रगल किया आप यहाँ तक पहुंचने. मैं कहा जरा सा भी स्ट्रगल नहीं किया. आई एंजॉयड एवरी बिट ऑफ इट. स्ट्रगल करता तो छोड़ देता ना उधर ही. ये बात इट वाज माय चॉइस. ने पीपल उसको स्ट्रगल दिखा रहे हैं जो मैं तो ऑफिस में सोया. अरे घंटा सोया, तुझे अच्छा लग रहा था इसलिए सोया. मेरे को ये बताइए, when did you start getting recognized in terms of for your work? ये पहली बार आपने मीडिया को इंटरव्यू और ये नहीं, मैंने नहीं दिया. और माय पॉलिसी वाज फॉर द लॉन्ग टाइम नॉट टू इंटरेक्ट विद मीडिया. Even in Flipkart, I think Sachin and Binny mostly were talking to media, and that was kind of policy unwritten thing. Ki we're not going to expose the lots of people to the media Okay. because it's not good for company. Do you enjoy it though? Do you like it? I learned it. I didn't like. I never thought I liked it. Your first interview But was I when? learned a lot from them. They were the one channel you can get the feedback also. I was seeing interviews, but like I just don't know. एक बंदा पूछ रहा था कि आपने पहली सैलरी के साथ क्या किया, फिर आपने ये पहली सैलरी तो मैंने सैलरी वाली तो लेता ही नहीं था मैं. मिली नहीं. हाँ, you said मिली नहीं. मिली नहीं वो बेचारा salary. बता रहा था कि मैं ताज ब्लू डायमंड, ताज में जाके मैंने कॉफी पी. मतलब क्यों करना है? तू कॉफी पी के मतलब पैसा नहीं है क्या? उसमें लिखा होना चाहिए क्या कि पहली सैलरी है? किसी और से ले ले, पैसे उधार लेके पिया. इतना वेट क्यों करना है जागने के लिए ताज? अजीब है. मतलब माइंड की ऑक्यूपेंसी है कि मुझे कॉफी पीना है, फर्स्ट सैलरी आएगी, 10 साल इसी में निकल गए. किसी से मांग लो पिताजी से कि सर दिमाग में आया कि कॉफी पीना है ताज में, मेरे को पैसे दे दो. आज पैसे आ गए. उस एटलीस्ट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, आपकी जो माइंड की ऑक्यूपेंसी वेरी इंपॉर्टेंट. इट शुड बी फ्री, देन यू विल बी प्रोडक्टिव. So you are not an overthinker. जो आया कर लो जल्दी जल्दी. वो दिमाग में होना नहीं चाहिए. Are you a believer of like a routine, like a fixed routine? No, I am a believer of getting things done, not the routine. Okay, तो चाहे तुम सुबह के 5 बजे उठो या उठो दोपहर के मत 2 उठो, बजे, सो मत सो, फर्क नहीं पड़ता. काम करके आओ बस. हाँ, this is the first tour, third wave. Why You I wanna brought go it in? here? You want to taste the coffee? I'm definitely can. down for some coffee. Yeah, let's do it. Let's do. Investment है आपका. हाँ, discount इन्वेस्टमेंट भी तो मिल बाद में जाएगा. बना, वो भी एक कहानी है. बताइए when we go inside. Actually, मेरा ऑफिस था उड़ान का फर्स्ट ऑफिस. वी हैव ओपनड हियर ओनली. Okay. Few like 100 meter. उस उधर काम थोड़ा जगह कम हो गया तो मैं इधर बैठना स्टार्ट कर दिया. They have also opened at the similar time. Okay. तो मैं कहा यार ये अच्छा सा कैफे लग रहा है. हाँ. और फाउंडर ओनर्स कॉफी बनाते थे. जो फाउंडर था, and he said that I know you have worked in Flipkart and
can so asking for some investment. अच्छा. मैं कहा तू ये पहले अपना बता तू क्या करता है. Then that guy, look at his conviction. Working in US, some good company again, having some good college from US. यहाँ TISB से पढ़ा था. हाँ. तो सॉफ्टवेयर की अच्छी कंपनी की नौकरी है. मुझे टेक्सास इंस्ट्रूमेंट पता नहीं क्यों याद आ रहा है. He has left the job and started this cafe. मैं कहा कुछ तो करना चाह रहा होगा. कुछ तो सोच के आया कुछ तो होगा. आया होगा. Then I wanted to think what the plan. तो नहीं, I really like coffee and मैं कहा ठीक है देखते हैं. Are you a coffee or a tea person? Both. Both? Born as a tea person, now liking coffee. Basically, शाम को tea चाहिए. बिहार में कोई कॉफी नहीं पीता. So you still have chai every day now? No, mostly no. बदल घर पे चाय. जॉलाइन घर पे निकल चाय. गई है. स्टाइल है. He's a big man now. घर पे चाय पीता हूँ. मतलब आप जैसे किस फील्ड में? अभी बताया आपने कि मैं चाय में बड़ा हुआ. चाय की हाँ वही बोला ना कि चाय की दुनिया में फिर कॉफी अच्छी लगने लगी. कॉफी अच्छी लगने लगी. और मैं बता सकता हूँ क्यों. वो हमारे साथ तपस रहता था. वो चाय दिन भर चाय पीते थे. हाँ. फिर कभी कभी ना कॉफी पे भी ज्ञान देता था. मैं अच्छी लग रही है. कॉफी तो he was grown up in मुंबई. मुंबई वाले लोगों से मिलो ना तो हिंदी में ऐसे बोलते हैं जैसे कि अभी अभी इनसे अंग्रेजों ने अभी अभी इनको छोड़ा है भारत जाने के लिए. कुछ जो साउथ बॉम्बे गए उनकी हिंदी अलग होती है. Yeah. जैसे वो दिल्ली में भी होती है बाय द वे. साउथ दिल्ली में Same. वो ऐसे भैया. मैं तो उसमें बुक्स लिख सकता हूँ. मैं तो उतना होकर नहीं गुजरा हूँ मैं इतना. उससे आपसे पूछ देंगे आपकी प्रिंटेड शर्ट बड़ी अच्छी लग रही, कहाँ से गए. वो जो बिहार से आए होंगे उसको लगेगा अच्छा लड़की ने तो पूछा है मेरे शर्ट के बारे में और उसको हंसना है. वो एकदम फैब्रिक से लेके कहाँ से सरोजिनी नगर में पहले 500 रुपया बोला था, कैसे मैंने इसको 200 रुपये में खरीदा. सीधे मुंह पे बोलता ही नहीं वहाँ पे. मजे लेने. वो भेजा फ्राई देखा आपने? हाँ देखा. That kind of thing happened. And every day. मुंबई और दिल्ली, जैसे मुंबई उतना नहीं बट दिल्ली तो बाबा रे बाबा. Yeah. उनके तो खास करके साउथ दिल्ली के उनको एक बार पता चल गया कि भैया कहीं बिहार यूपी और इधर कहीं से आए हैं. अरे बबुआ बैठो. उनको बस चाहिए कि मजे ले लो इसकी. Delhi, I feel like the first 30 seconds only in Delhi, everyone knows, okay, this person's South, this person's North, this दिल्ली में person's सबसे East. ज्यादा स्टीरियोटाइपिंग और रेसिज्म है. Yeah. सबसे ज्यादा. और भैया कहाँ से आए आप बताइए ना कुछ अपने बारे में. जैसे तुम पूछ रहे हो ना. मैं भी मैं आता हूँ औरंगाबाद से. बताइए ना तुम अपने बारे में कुछ. और तो तुम्हें लगेगा अच्छा पूछिए मैं तो सारा बता दूंगा. This is the first store and I always tell them कि इसको जैसे आप वहाँ जाओ सिएटल में जाओ. सिएटल में हाँ फर्स्ट स्टोर ऑफ स्टारबक्स. हाँ. उसको टूरिस्ट की तरह दिखाते हैं. And you don't do that ऐसे here. लाइन लगता है वहाँ पे. आप जाओगे फायर है. तो आज भी मैं तो बहुत हंसता हूँ. लंबी सी लाइन थे, हम लोग भी लगे हुए थे. स्टारबक्स का फर्स्ट स्टोर है. आगे एक बंदा इंडियन टाइप का ही दिख रहा था. हाँ. बाद में थोड़ा सा खड़े रहे तो पता चला पाकिस्तान का है. इतने लाइन के बाद जाके काउंटर बोलता है एक चाय दे दो. मैं कहा साले मैं हंस के पागल. इतना लंबा लाइन लग के इतना धाके काउंटर बोलता है एक चाय में. But पर that's आजकल चाय इज सच अ हॉट it थिंग is. है. It is. बट आई एम टेलिंग यू they call it अबाउट. बट यार एक बात बताओ, Also, yeah. फर्स्ट स्टोर स्टारबक्स गए हो चाय पीने के लिए गए. The most amount of impact you can bring is when you can become an elected leader. Yeah. More than UPSC also. Of course. UPSC वाला तो that is no comparison. If you are like you have a vision and all, I think democracy enables you as a leader to do more than any officer. Am I right? You are bounded by that. हमारा नेता कैसा हो, तुम्हारा जैसा हो, क्या बात. I'll be so happy. I'll meet your father and ask how to think about it. In the future, if an opportunity arises out of nowhere, Opportunity, मैंने politics में जाना is a choice. It's not an opportunity. You have to take it. Lots of times it's an opportunity. Yeah, of course. I understand what you're saying, but like really you wanted to do it, then it should be like your like interest, hobby, passion. You don't like donate to any charity or anything. I do. But he doesn't बताऊंगा talk नहीं मैं. about it that much, है ना? Yeah, like Plaksha University, I have one of the founder.
What is your philanthropy University, sector? Like education? Education में पढ़ रहा है Mostly आदमी इनके पैसों से. education. Plaksha IT Endowment Fund, IT Delhi. So I'm on their board also. So we are the founding member. Then Nikhil only has started this. YIPP. That. Yeah. In COVID time, I have done a lot. What do you like about this car? This one, Yeah. I don't know. खरीद तो लिया था, बाद में पता चला ड्राइव इसके बाद ड्राइवर चाहिए. उसके बाद से ये तो तय हो गया था कि मैं नहीं चला सकता. नहीं, but I am seeing this trend कि भाई फाउंडर अब खुद इंस्टाग्राम I रील don't like बना रहा है. You are fairly private about अपना your personal बन लो कि if you life, wanted no? to नहीं, like you can have like if you wanted to give like mentoring. Yeah. Somebody has to mentor, like funding. It's a social responsibility according to me. Yeah. If you have money, resources, if you wanted to support some guys who are like struggling and all, you should do that. कुछ भी करूँगा, रील बनाऊँगा, ये करूँगा, ये क्या बकवास है? What is your social media consumption like? If you can go and see yourself. Nowhere. Nothing. Yeah. इन्वेस्टर आप पहले बने कि उड़ान पहले आया? 2012 में जब पैसा मिला मेरे को फ्लिपकार्ट से, Okay. तो उसमें ऑलमोस्ट 80% मैंने पैसा एंटरप्रेन्योर्स को दे दिया था स्टार्टअप में. Wow. And what was the like And idea what- behind it? आइडिया ये था कि यार देख सिंपल आइडिया था मेरा तो कि मतलब पैसा, एक गाड़ी और खरीदा था मैं उस पैसे से और शादी की थी. 2012 में ही 2012 गॉट मैरिड और रेस्ट ऑफ द मनी आई गिवन इट टू द एंटरप्रेन्योर्स. Who was your first investment? Like पहले बार भरोसा किस पे किया? That I'm coming there. So I don't have a hypothesis. I have a simple framework. If you wanted to learn, you have to invest. Doesn't matter. So people have like lots of hypotheses कि एंजल ऐसे करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट ऐसे. मेरा क्या, पैसा लगा दो, दिमाग खुद चलने लगेगा अपने आप. 2-4 गलतियां होंगी. So I paid a fee for that learning because I firmly believe learning in my style works when you have to like invest into that. गलत सही बाद में पता चलेगा. I think that what I have done. So given the money, started focusing and then realized कि अच्छा ऐसे नहीं करते हैं, ये होना चाहिए, वो होना And what चाहिए. was your initial sectors that you invested in? Mostly tech. And check size कितना? ये सारे क्वेश्चन ना मैं बोला ना कि बाद में सब सीखा मैं. अच्छा. मेरे तो था कि अच्छा पैसा, लोग तो ये बोलता है इतना सारा दे दिया. मैं कहा अच्छा कम देना था क्या? इतने पे दिया, इतने इक्विटी. नहीं, that is so true. हाँ। And what was your first investment? If I have to remember, बहुत सारी कंपनी का तो नाम भी याद नहीं है, डूब ही गए थे सारे. एक चायोस का कॉम्पिटिटर था, उसको भी दिया था पैसा उस समय. When did you realize कि okay, like you were doing operations, you were doing supply chain, then you got like money, then suddenly you said okay fine, what will I do with this money? I'll invest it, right? Yeah. How did that shift happen? Like why did it happen? Like It has happened because somewhere I thought कि if let's say somebody who need help, might be I have reached easily, and that was my hypothesis. Everybody can't reach. and how would you meet these people in circles? It's like Flipkart की वजह से आप मिलते रहते हो. लोगों को आप like if you we say that Flipkart is a not only one company which is a founder of a startup ecosystem. I was just about to say कि Founder of a startup ecosystem. Yeah. So आज भी देखोगे जितने भी कंपनियां हैं, directly indirectly they have worked with the Flipkart. Very interesting. आधे ज़्यादा top management of initial Flipkart days are all running. Directly indirectly Yeah. सब कोई ना कहीं तो हमारे साथ वो काम किए. And even you have two Yeah. founders Yeah. who are ex Flipkart now, right? Yeah. And how did you figure out, like, why did you start Udaan? So I'll tell you why. So in 2015-16 we have realized Flipkart valuation 15 billion. Nobody would have thought कि यार, और उसका ना अंदाजा तब लगता है जब आप रहते हो तो ऐसा लगता है 15 नहीं 100 होना चाहिए. But try to understand what I'm saying. फिर लगा कि यार बाकी कोई कंपनी इकोसिस्टम में बढ़ ही नहीं रही है, सिर्फ फ्लिपकार्ट के पास वैल्यूएशन, ग्रोथ, बिलियंस ऑफ डॉलर यू कैन रेज या एबिलिटी टू रेज यू कैन रेज, इन्वेस्टर आर लाइक वांटेड टू गिव दैट मनी. तो हमें लगा कि यार ठीक है, आई हैव माय ओन रीजन कि आई हैव लर्नड अ लॉट, कैन वी डू समथिंग एल्स आल्सो. एंड आफ्टर 7-8 years I just wanted to take a pause in my career. आज अगर 18-19 साल का बच्चा अगर ग्रेजुएट होके निकल रहा है 21 साल का and they want to start a business,
What should the initial first few steps be? मेरा सजेशन ये रहेगा, एनी हाउ आई एम नॉट डिस्करेजिंग पीपल, बट आई थिंक ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस बनाने में ऑर्गेनाइजेशन और इन सबका बहुत हाथ है. हाँ. तो जनरली मेरा एक्सेप्शनल आर एक्सेप्शनल, सो दे डोंट नीड हेल्प, डजंट मैटर यू आर हेल्पिंग देम और नॉट. बट मेरा मानना है टेक सम एक्सपोजर एंड एक्सपीरियंस टुवर्ड्स द like work for somebody, work for in some firm, understand some dynamics, and once you have like understanding, then start. आप data wise देखोगे, most of the successful founders when they have started after their like 10 year 15 year of career, When you have experience, Yeah. basically, yeah. so the data says that they have created a very successful businesses, Yeah, हाँ. and then वहाँ पे mortality rate कम है. right. अब 20-21 साल में मोर्टालिटी रेट मोर देन 99% है, उसको घटाना जरूरी है. तो गो थ्रू सम फॉर्मल प्रोसेस. That's my suggestion. I'm not saying that that's the only. No, so which brings me to my next question asked by your son. Yeah. His second question was, what do you want your son to become? उसने लिखा है पेपर पे, वो ये Oh my उसके God. राइटिंग में है मेरे That's पास. so cute. So cute. 11 It just shows that he really looks up to you. Yeah. And the fact that your validation is so important for him. Yeah. I think I'm amazed because he hasn't asked me. So what do you? Might be he has found out कि hey, let me ask indirectly. Yeah. So what do you is expect the from your trajectory? What do you like as a father? Like how are you different from your father to you versus you to your son? यार सारे फादर एक ही जैसे होते हैं. They are more concerned about their children. अब ये पूछना कि नहीं उनका एक्शन क्या था, that's the bottom. Am I right? You are concerned पे about your. left No. I'm left- just talking about left. basic fundamentals में difference क्या है as your father versus you as a father? यार हम लोग के फादर हमारे टीचर तो हम लोग को मारते भी थे बहुत ज्यादा. हाँ. लाइक अब कर सकते हो क्या? आई डोंट थिंक इट्स पॉसिबल. सो उमेश इज वन ऑफ माय फेवरेट प्लेस इंट्रोड्यूस्ड बाय माय वाइफ. Do you miss Bihari food? लिट्टी चोखा. Yeah, यहाँ litti पे एक दो chokha. एचएसआर वगैरह में मिल जाता है, बट ऑथेंटिक वन इज नॉट देयर. No? So you make it home? Like, या आई एम अ कुक आल्सो. yeah? What do you cook? अरे यार इतना घूमा टाइम वेस्ट किया इनसे खाना बनाते. Anything. Like what? I make all the most of the Bihari cook. So in childhood I was like assistant to my mother. Cute. I learned a lot. What is your best dish that you make that your son and your wife like? Chicken, mutton for sure. Both Nikhil and him need to cook together now. Video of The WTF. spice, You know Nikhil's recipe, yeah, no? recipe, but mine is very different. Yours will be more flavorful, I'm more assuming. So when you came to Bangalore, did you have like a culture shock with like food, people, with place? None of that? No, not that much. So you liked dosa immediately, idli immediately? Yeah? बड़ा हमेशा से अच्छा लगता था मेरे को. बड़ा, हाँ. yeah. Dosa was good. अब मैं आपका दोस्त कोई आ रहा है आईआईटी से, वो आ गया सालों बाद, अरे भाई सुजीत भाई मैं बैंगलोर आया हूँ, तो आप कहाँ लेके जाएंगे उसको? अभी तो लेबोन ही लेके जाएंगे. अब तो बड़े आदमी हो गया. नहीं थर्ड वेव लेबोन बोलता है ये सब तू कब सीखा? बिहार में तो था नहीं. एक्चुअली एक बेनेडिक्ट और ये सब बोलेंगे वहाँ पे जाके. do your friends call you out like your true original friends के तो क्या भाई बड़ा आदमी बन गया है अब तो? They're not like that, but they call. Then you still stayed extremely true to your roots, Yeah. which is commendable. Even they say that he hasn't changed a bit. Which is Yeah, you which is haven't commendable. changed Like you a can't, you can never tell me. Like to be very honest, if I met him, there's no way I'd know this man has invested in 150 companies. There's no way I'd know he drives a Range Rover. Yeah. Like he's the guy who would yell at you, hey, take it out. And okay, so today if I had to ask you like top 5 spots in Bangalore, where you You would like, take a like- friend, guest, yeah, wife, whatever. one date place, Yeah. one What is friend. your favorite date? मैं आपको बताता हूँ. The most of the time we spend और mostly like I said that कि थोड़ा मेरी बीवी से पूछोगे ना तब भी वो बोलेगी ये सुजीत तो कहीं लेके ही नहीं जाता. जब देखो और निखिल उखिल इनके साथ और उसे मालूम नहीं हम लोग इसी KFT में बैठ के बकवास करते रहते हैं. Just So for you virtue like signaling. food? हाँ, Any food, food? हाँ. हमारा एक थाली वाला जगह है वहाँ पे खूब सारा खाया. हाँ. एक रमेश टिफिन करके है वहाँ पे HSR में. So you like all these small establishments?
लेकिन हम जैसे कोरमंगला में थे, काफी हम जाते थे, सत्याबार मैंने बोला ही, इसमें We यहाँ used to पे go to that Sukhsagar. या Sukhsagar is epic. सुखसागर, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। उस पूरा रेस्टोरेंट में जो पूरा गली है, पूरे रेस्टोरेंट गली है वो, Yeah. तो वहाँ पे काफी गए हम लोग। लाइक अभी जो लाइफ बनी है वो तो अपने जर्नी पे बनी है। और उससे कोई ड्रीम भी नहीं था, मतलब कोई पूछे कि आपने भभुआ में रहते हुए स्टार्टअप सोचा था, घंटा सोचा था। सिंपल था, एक इंजीनियरिंग कर लो, कोई नौकरी ले लो, या तो अगर उसमें है यूपीएससी कर लो। आई थिंक दैट इफ यू से दैट्स अ ड्रीम। सेकंड थिंग, यू ऑलवेज, जैसे ड्रीम क्या होता है, ड्रीम होता है कि कैन यू बी अ पार्ट ऑफ सिस्टम एंड ब्रिंग ए इम्पैक्ट ऑन पीपल्स लाइफ। Politician. यार आप एक मिनट ऐसा वहाँ पे कैमरे में देखिए, ऐसा अगर ये तो, अरे मैं फोटो तो खींच के रख लेता हूँ। I think that should be that's what always I was very inspired by that. Right. लेट्स टेक इट टू जीरो। आज आपके पास 10 लाख रुपए हैं, मैं आपको 10 लाख रुपए दे रहा हूँ। व्हाट्स स्टेप 1 फॉर यू? For a startup? Just for a startup, what would you do with 10 lakh rupees? Or what would you recommend? So I have 10 lakh rupees savings. I will recommend use that capital to depend on your age, at which stage you are. But optimize for your learning, optimize for what you want to do. Okay. Don't waste on things like कि एक होता है ना सिंपल वर्ड में कि 10 लाख मिला है और कोई बोलता है स्टॉक मार्केट में लगा के पैसा कमा लो। आई विल नॉट रिकमेंड दैट। निखिल का पूरा खेल। Episode 1 इधर, episode 2 इधर। But yeah, that but when you have enough the capital which have only one purpose, then optimize it for how can you be more nearer to your dream. Okay. और 10 लाख का मतलब क्या है? जैसे कोई बोलता है कि मेरे को बड़ा अच्छा है कि मुझे वो जाके मैं कहीं ट्रिप ले लेता हूँ, घूम लेता हूँ। You should do it. बट उसके ऊपर बैठ के मत सोचते रहो कि यहाँ लगा दूंगा तो क्या होगा, इसका कर दूंगा तो मैं क्या होगा। कर दो। हाँ, कर लो। How often do you go back to Bihar? At least once a year. My parents are there. अच्छा, they don't like, you don't वो want them आते to. हैं, बोर हो जाते हैं, मतलब उनकी एक अपनी कम्युनिटी है। हाँ। दे लाइक टू, यहाँ आते हैं, 1-2 हफ्ते रहते हैं, उनका अपना लैंग्वेज है, अपना सर्कल है, दे डोंट हैव डिपेंडेंस ऑन मी कि दे हैव टू बी हियर। दैट इज द बेस्ट थिंग। दे कैन बी देयर, दे कैन कम हियर। Do they enjoy watching you on YouTube and stuff? मेरे को कभी कभी लगता है वो सारी दुनिया उनको समझ में नहीं आती। अच्छा। नहीं, वो खुशी तो होती होगी ना। Do your parents understand what you do? Yeah, they understand. But at the extent, how much, I'm not very sure, but they definitely understand. What is the metric of your parents to understand कि भाई इसने अच्छा कर लिया है? I'm sure you said startup what अपनी ज़मीन कितनी है and all of that. नहीं, वो तो लैंग्वेज समझ में आता है, बट उनको they understand more than that because now from last 18 years, आपने almost 18 years ना। Yeah. So they never आप 2005 question. से देखो 20 साल पता हो नहीं गए। मेरे मन में मैं आज भी 2019 में क्यों हूँ। 20 साल हो गए मेरे को। So they Almost never startup से। question your choices, decisions. Once क्या कर रहे you हो? made money. नहीं, कभी शुरू में करते थे, ऐसा नहीं है कि जैसे मैं याद है अभी फ्लिपकार्ट में जब बोलते थे कि बोलते करते क्या हो तुम लोग, और उनको मैं प्लेन आंसर समझाता था कि वी आर सेलिंग बुक्स ऑन इंटरनेट। नहीं इंटरनेट सुना था न, बुक्स कैसे बिकता है ऐसे। Yeah. बंदा अच्छा ये किताब की दुकान है, तुम लोग उसको वहाँ पे क्यों बेच रहे हो, यहाँ भी तो बिकी रही है। How to make that Yeah. understand? That is true. That's true. though. I'm talking about in 2008 where broadband was only there Yeah. and that number was 13 million users. 13 million. That's really less. Now आज 600 million. 900. ले. How do you think startups can grow further? If you had to give an advice, recommendation in terms of growth for them, in terms of Bangalore as a city, क्योंकि अब ऐसा हो गया है इंडिया में कि अगर तुमको एक्टर बनना है तो तुम बॉम्बे जाओगे, अगर तुमको धंधा करना है तो तुम बैंगलोर जाओगे। इमेजिन गुजरात का पूरा ब्रांड इमेज एक सिटी खा गया। Like नहीं, गुजरात का धंधा बहुत अलग है। न्यू इकोनॉमी Yeah. न्यू it's इकोनॉमी, new ये टेक economy. फैक Yeah. बिना कोई मैन्युफैक्चरिंग करे। नहीं, Bangalore already has grown up and is one of the best world class ecosystem.
हाँ. तो बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है. इम्प्रूवमेंट द फाइनर पॉइंट्स हैं मेरे को लगता है कि आई थिंक इट कैन गिव द एज टू Bangalore further. Some of the pieces like formalizing some mentorship for new entrepreneur. अभी क्या होता है, वो स्ट्रगल करता है. कैपिटल तो चलो मोर और लेस थोड़ा थोड़ा सॉल्व हो गया. लोगों को अगर होता है तो देयर इज अ सीड फंड, देयर इज अ एंजल इन्वेस्टमेंट, देयर इज अ सीरीज ए, वी हैव लॉट्स ऑफ फंड्स एंड ऑल. बट यहाँ मेंटोरिंग अभी भी बहुत ज़्यादा लैक करती है मेरे को लगता है. सो मेंटरिंग इज लक. अच्छा बंदा मिल गया तो एक अच्छा सजेशन दे दिया. अगर उसने अच्छा सजेशन नहीं दिया, आपने कोई आदमी का आप जिसको आता नहीं, क्योंकि आप किसी से भी एक ह्यूमन नेचर किसी सजेशन मांगोगे ना, 99% लोग ऐसा नहीं है ये बोलेंगे मुझे नहीं आता. वो अपने इमेज को लेके हर किसी भी चीज पे अपना ओपिनियन दे देते हैं. बोलने के लिए बोल दे रहे हैं. नहीं मतलब मेरे को ऐसा लगता है. हाँ. तो मेंटरिंग को अगर सॉल्व कर दिया जाए तो मेरे को लगता है कि स्ट्राइक रेट एंड दिस सिटी इकोसिस्टम विल फर्दर बूस्ट. So I'll tell you what. So WTF, our podcast, we are now working on building the WTF community. If we are able to like request you to do a 60-minute masterclass, where like a few lucky founders, जो जिन्होंने बस genuine SOP दिया है हमको, they are able to come together, like 15-20 of them. आपके साथ 1 घंटा अगर उनको मिल गया, so that's the kind of things we are trying to tap And into. that's a part of mentorship ecosystem. I really believe that. So I'm counting you in then. So एक इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर है थोड़ा सा. नहीं मैं तो नहीं हवा. I'll support Ajay. The only thing we know is कि you've invested in like 100-150 startups. Yeah. So I'm guessing it is a fairly easy process to impress you, or what is the process to impress you? क्योंकि 150 अगर आप because you're the kind of guy who seems like ले भाई तू पैसे ले, नहीं चला चला ठीक है. तूने I feel like you trust the guy more than the product. Yeah. But So what's the process of pulling your money out? be genuine and honest. Don't try hard to impress. So basically, if you're genuine and honest and give this is my and really, so that's one thing. But I have also, because look in 10-15 साल में last जब से 12 साल हो गए, in that I've realized just for sake of investment one should not invest. इसको मैं token like होता ना कि collecting the tokens, and rather than how can you be more impactful. So in last 2 years, and I will give an example. Let's say if I involve a bit, I got some time involved a bit with Third Wave. They have scaled. They have also learned about QSR. Like in the last 1 or 2 years, I also focus on some different sector than tech. The QSR in India, I believe, will be big. Yeah. So I've learned that, and some of the hypotheses I've validated through them, being not the part of execution, but as a strategy, I was part of that. So only you'll do if you have a skin in the game. Yeah. So rather than now investing in hundreds of company, invest in like 5-10, own a bit more, and be a part of that journey in somehow. I think that's the mode I have changed for now. Yeah. Do you think like people, once they have like lots at stake, when you have the stakes are high, your bank balance is high, your company is big, they avoid being vocal about politics? I don't think so. Convinced, like मैंने बोला ना कि रिटायरमेंट का बात करने वाले इनसिक्योर होते हैं. मेरा मानना है कि जो आदमी को कॉन्फिडेंस है और जिसको मालूम है कि उसने क्या किया है, उसको कभी सब डरेगा चीजों से फर्क नहीं पड़ता. That's I true. don't think so. Over the last 10 years, something that, like I feel has changed is that the government now works with private companies and this and that, right? And you see, in the name of development, you see a lot more happening. Because you have like both sides, the government and private sector coming together to do a lot of projects. Yeah. Do you think that's good for an economy? Yeah. Privatization? Privatization, I believe, is good. I mean, is it good in general, or is it worked for India? It's good in general. Okay. But it has to be controlled, regularized. So somebody, let's say that creating a monopolistic nature and then extracting money, that privatization is not good. So government should watchful of that. Okay. So monopoly gives the incentive the persons to do anything. So government as a government,
लाइक एक वो बोला था ना, मतलब आई ऑलवेज लाइक दैट एज ए स्टेटमेंट कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस. Ah. I think that should be the nature. So when you say that governance means watch out. There should not be a monopolism and somebody is using that monopolistic presence to more monetization or extracting more or taking more benefit. तो वो सब नहीं होना चाहिए, उसको मैं गवर्नेंस बोलता हूँ. But don't you think like capitalism does quantify for monopoly? Like, don't you? That's why I'm saying that the government क्या कर रही है फिर? इसका मतलब ये नहीं है कि कंट्रोल कर लो हर चीज. Got it. नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक और चाहे जो भी किया, क्या फायदा हुआ हमें? उसका भी तो आदमी बोलता है ना कि वी हैव टू ऑल्सो एनालाइज थिंग्स व्हाट वी हैव टेकन एज द पॉलिसी. गवर्नमेंट हैज टेकन द पॉलिसी, उसको कोई तो कोई देखेगा ना कि इसका क्या बेनिफिट हुआ. What's very impressive is that you have navigated all of Bangalore without looking at a single map. गली That's गली true. कूचे में से जो आप लेकर आए हैं. And for your But driver I haven't gone to that side now. That side I would have needed assistant. Let's say Gandhinagar and all. Ah, okay, okay. How many hours a day do you work? 18 तो लिखा था. मैंने पढ़ा 18 है. 18 hours is I'm sure it's true. अभी तो कम, लेकिन एक टाइम फ्लिपकार्ट, उड़ान, इन सब में काफी ज्यादा करते थे हम लोग. उस समय तो मैं सुबह सुबह उठ के बिना सोए सुबह फ्लाइट पकड़ के कहीं भी चला जाता था. लाइक फ्रॉम हियर टू दिल्ली, दिल्ली टू मुंबई, मुंबई टू अर्ली मॉर्निंग कॉल्स एवरीबॉडी फॉर रिव्यू. तो Now you live a more balanced life. बोलता ही है ना निखिल कि 2 घंटा जिम में जाता, तो बैलेंस नहीं होगा ना फिर. बैलेंस हो. हाँ, 2 घंटा जिनके पास टाइम है जिम जाने का. बैलेंस से ओवर बैलेंस हो गया लगता है. Do you think the family has something to do with that? फैमिली में Like, you know, having a kid, wife, and all of this kind of. I must say that I think that what I always say कि we having a right partner and like आप बोलोगे she has taken almost more than 90% of the responsibility of your kid. Given of her dream, she is also like lawyer and all, so decided not to pursue that. It's a great combination. What is your favorite movie? You said. Which one? Which is your हम favorite अब हमारी स्लैम बुक फिल कर रहे हैं. Movie? हाँ. Of course, Godfather है ये सब. Beautiful. और सब Beautiful Mind and एक वो था ना, क्या नाम था? Life is Beautiful. Are you talking about the multi-starrer? Life is Beautiful. No, that guy who's in Yeah. the concentration camp and how he has navigated. उसका बच्चा भी होता है. And Really? I have to check this out. And Hindi में? हिंदी और हिंदी में बहुत भोजपुरी? पुरानी भोजपुरी नहीं देखता मैं. No, you don't. How come? भोजपुरी मूवी कहाँ बनती है अभी? इंडस्ट्री बचा है क्या? गाने हैं बट हाँ. मूवी उतने आई डोंट नो. हिंदी में? मेरे से आप पूछोगे तो जैसे राजनीति मूवी जो बनाई थी बहुत अच्छी बनाई थी. So you are a very heavy politics person. गॉडफादर नहीं, ये गैंग्स ऑफ वासेपुर एंजॉय करते हैं. गैंगपुर वासेपुर इज अ वेरी कल्ट मूवी. आप ये देखो देवदास ना, वो वाला शाहरुख खान वाला, दूसरा वाला डेव डी. Dave D, Abhay Deol. So you are a Kashyap fan. And a rock star. I like the animal also, by the way. Oh, interesting. बताइए. चलो एक वायरल रील मिल गई बैठे बैठे. मुझे बहुत अच्छा लगा. क्या? Why What did did you you like like about it? Because the way his passion, his acting was amazing. Acting amazing, music amazing, technicals amazing. But otherwise, Like the way he's shown the passion of whatever he loves, let's say his father and all. But like उसमें he has like matched to the T. कोई गुंजाइश नहीं थी उसके उस प्यार में अपने पापा के लिए. अच्छा मजा आया कि नहीं आपको आज? मेरे को तो गाड़ी चलाने में और आप लोगों में बात करने में दोनों में मजा आया. मजा आया ना? I'm glad. कंपनी मैटर्स. मुझे वही टेंशन है. आप लोगों को मजा आया कि नहीं? For मुझे तो, sure. I तो really enjoyed. I was mentally prepared only. आप बहुत खुला बोलते हो. Sorry, my हिंदी. यही सब. It's okay यार. आपके लाइन बहुत अच्छे हैं. Line हाँ? हाँ, But like आप- you know, like he has these what do you call them? Statement Wow. lines. What do you call it? अरे Satire, help ना. satire. हाँ. नहीं punchline. Punchline. हाँ. अगर आप
जीरो से स्टार्ट करेंगे तो पता है आप एक और क्या चीज कर सकते हैं? क्या? स्क्रिप्ट राइटिंग. That's true, एक और actually. वासेपुर लिखो. आप आपके साथ बैठे होंगे ना तो शायद लिख भी दे सकते हैं. Gangs of Wasipur 4. Thank you so much. Thank you so much, boss. Thank you Nice so meeting much. Thank you, Nice Sujit. Very It's been nice. damn good fun. I hope this IP becomes big and you keep coming as a guest. Let's see. And please tell और जरा- Swastik thank you for all the questions. Oh my God, he It has was asked very the sweet. toughest question. अब जाके उसको in person जवाब देंगे. Oh my God. And next guest sorted out for us. Okay? हम ऐसे करेंगे कि आप अगला गेस्ट लॉक करके दीजिए. Done. Done. Thank you so much. Thank you. so much. Bye, guys.